वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो आज हम जो है वो एक बांग्लादेशी वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने सोचा बांग्लादेश को भी देखें। तो इस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश अ न्यू एशियन पावर ऑन द राइज। तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं वीडियोस में, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है बांग्लादेश में। नो डाउट इस वीडियो में भी हम ये इस तरह का ही कुछ देखेंगे, तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Bangladesh has had to confront several hurdles since its founding in 1971. From hunger and poverty to insufficient power supply and rising radicalism, Bangladesh has faced and continues to face many challenges. Dhaka, the megacity and country's capital, however, has experienced an exceptional period of economic growth in the last few years under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Let's take a closer look at the South Asian nation boasting one of the fastest growing economies in the world. ट्रैफिक 2022 finished with a bang in Dhaka, with the country's very first metro rail opening. मेट्रो रेल ओपनिंग। Large numbers of commuters were seen lining up in front of the metro stations in Uttara and Agargaon, all eager to ride. With the newly inaugurated metro train service, the recently opened Padma Bridge, and the ongoing construction of a new airport terminal, Bangladesh is experiencing a period of growth and excitement. Feels like orange train. The nation is establishing and implementing the critical infrastructure needed to move into a new era of modernization. बचपन में सबका होता है ना, ट्रेन में इधर उधर चीजें देखो। আর ফ্যামিলি সহ নিয়ে আসি আলহামদুলিল্লাহ, ঘোরার জন্য খুব ভালো লাগতেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আমরা আলহামদুলিল্লাহ খুব উন্নয়নশীল দেশে পৌঁছেছি আলহামদুলিল্লাহ। এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবার আজকে সকালবেলা চলে এসেছি মেট্রো রেলে উঠতে। মেট্রো রেল হচ্ছে আমাদের জন্য একটা স্বপ্নের মতো। এত বড় স্বপ্নটাকে আসলে বাস্তব রূপে দেখতে খুবই ভালো লাগছে। এর জন্য ঘুরতে যাওয়ার জন্যই চলে এসেছি। Bangladesh is experiencing major economic advancement and is on track to graduate from the United Nations least developed countries list by 2026. यानी 2-3 सालों में Prime Minister Sheikh Hasina and her political party, the Awami League, have been in power since 2009. Under her leadership, the country has achieved many economic milestones and human development also continues to improve. However, Bangladesh still has many challenges she must face. The fight against radical Islamists still rages, for example, as they continue to pose a significant threat to the country's economic growth and modernization. 2022 proved to be a year of many achievements across various sectors for Bangladesh, as the country registered a whopping growth of 7.2% amid a global slowdown. It is also noteworthy that Bangladesh's march towards economic prosperity has always been aided by its all-weather friend, India. इंडिया से काफी अच्छे रिलेशन। I really thanks to Prime Minister Modi to take this initiative, and that he contributed vaccine to not only Bangladesh, also some South Asian countries, and it's really very, very helpful. India's investments and bilateral trade have greatly benefited its neighbor. Both countries not only share physical borders, but many cultural similarities as well. As a result, significant progress has been made in recent years in enhancing the connectivity between New Delhi and Dhaka. The relationship between India and Bangladesh not only benefits the two countries, but also plays a crucial role for the political and economic stability of the region.
New Delhi and Dhaka have already stated that they would step up cooperation to counter terrorism, violent extremism, and radicalization in the subcontinent. Delhi's commitment to support Dhaka is critical for a peaceful and stable South Asia. The scenes in Karachi are devastating, with many queuing for hours for a bag of subsidized wheat flour. With the price of a 10 kg bag of flour reaching 1,600 Pakistani rupees, approximately 7 USD, a great many of Pakistani citizens can no longer afford to buy basic food necessities from shops. Recently, the Pakistani Prime Minister, Shehbaz Sharif, too acknowledged the dire situation his country had gotten itself into, and said that it was a matter of shame that a nuclear power had to resort to begging. तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं और ये तकरीबन कल का भी यही मामला पूरा दिन मैं रक्षे वाला हूँ अब मजबूर हो गया अभी 3 महीने गांव में गुजार के आया हूँ ये आया हूँ तो ये आफत आया हुआ है पता नहीं शहबाज शरीफ की वजह से और क़यामत आ रहा है आगे क्या होगा. Pakistan's citizens continue to suffer due to the multitude of crises the Islamic nation has been facing. Political volatility, rising food inflation, a worsening economic crisis, and devastating flooding have all combined to put Pakistan on the verge of collapse. According to the State Bank of Pakistan, the country's foreign exchange reserves have fallen to 4.3 billion USD, the lowest level since February of 2014. Containers of food items, medicines, and other goods remain stuck at ports across the country due to the rapidly depleting foreign exchange, leading to a shortage of essential goods. यार गवर्नमेंट से मैं यही कह सकता हूँ कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो गाड़ियाँ बड़े लोग जो अमीर लोग लेते हैं उनके रेट बढ़ाओ आटे पे क्या रेट बढ़ा रहे हो यार आटे आप कर्जा लेके कहीं से भी आटा ले आओ दूसरी चीज़ों पे आप टैक्स लगाओ कुछ भी करो जो बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं अभी आटे पे बढ़ा रहे हो अमीरों को तो उनको तो परेशानी तो हमें ही हो रही है ना आप आटा सस्ता करो बाकी चीज़ें बाढ़ में जाए जो करनी है वो करो. According to the World Bank, Pakistan's economy is expected to grow by only 2% in the current fiscal year. It is expected that poverty in the poorest regions of Pakistan will worsen. Further, the national poverty rate may increase by 2.5 to 4 percentage points, pushing between 5.8 and 9 million people into poverty. The struggle for Pakistanis seems infinite, as macroeconomic risks in the country remain high and uncompromising. A large current account deficit, high public debt, and a lower demand from its traditional export markets continue to keep Pakistan on the edge of complete collapse. सबसे पहले जो है वो उन्होंने मेट्रो ट्रेन के बारे में दिखाया कि जो कि आई थिंक सो कि वो कंप्लीट हो गई है और उसी का बाकी प्रोसेस में या शायद किसी कुछ सिटीज़ में अभी स्टार्ट होगी और बाकियों में आहिस्ता आहिस्ता होगी और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिमिलर थी लाहौर में जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है उससे ज़्यादा काफ़ी यानी सिमिलर थी उसी तरह की. और इसके अलावा जिस तरह उन्होंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में एक प्रीवियस दिखाया कि मतलब किस तरह से सूरत हाल थी सारी बांग्लादेश में और एक जो है वो रिसेंट ईयर्स का दिखाया उसमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस था रोड्स वगैरह और इसके अलावा भी अगर देखा जाए सारा. और जिस तरह उन्होंने यानी दिखाया ट्रेन में जितने लोग थे उनका एक्सपीरियंस शेयर किया तो वो सब बहुत खुश थे. जाहिर है उनकी कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है जैसे कि इस हवाले से जो है वो हम काफ़ी वीडियोज़ पे भी रिएक्ट कर चुके हैं कि बांग्लादेश ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इस सारे यानी इस मुकाम तक पहुँचने के लिए. मतलब जिस तरह हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं तो कितने बुरे हालात थे पहले बांग्लादेश के और जितना उन्होंने ख़ुद को ग्रो किया तो जिसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश एक बिल्कुल मिसाल की तरह है यानी दूसरी कंट्रीज़ के लिए जो बिल्कुल ज़ीरो पे थे और अचानक से कितने बड़े लेवल पर आकर पूरी दुनिया में अब
काफ़ी इसके ज़्यादा अलावा डेवलप जो है हो वो गया। इसमें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो सारे रिलेशंस वगैरह बताए, और उनकी पीएम जो है वो शेख हसीना के बारे में उन्होंने बताया कि उनके रीजन में किस तरह से सारी जो है वो डेवलपमेंट वगैरह हुई और उन्होंने बांग्लादेश में। काफ़ी और काम करवाया बांग्लादेश में, इसलिए लोग भी उनसे खुश हैं। बाकी तो ये कि इस हवाले से जो भी आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और आप मज़ीद आप जो भी वीडियोस हमें सजेस्ट करना चाहें वो आप हमें सजेस्ट करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।